Hey everyone, welcome back to my channel and here I'm going to tell you कि आप कैसे भाई आराम तरीके से देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलेगा अपन, ठीक है। दोनों इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेगा। तो भैया आज मैं आपको बताने वाला हूँ यार हाउ कैन यू इंस्टॉल प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड ऐप्स इन विंडोज़ 11 इन 4 GB रैम। यस, 4 GB रैम के अंदर भाई लोग कैसे विंडोज़ 11 में प्ले स्टोर और अपना एंड्रॉयड ऐप्स कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम यही आपको आज का सॉल्यूशन बताने वाले। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा अनसपोर्टेड पीसी, दिस इज माय अनसपोर्टेड पीसी। It's written that this PC not secure boot, TPM 2.0 is not available, processor is very old and is not supportable. So here I'm gonna tell you how you can just install Android apps here. तो मतलब भाई सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलना है, then you are gonna search to a Google, like what you can search is uh, if we search is Android apps in Windows 11, Android apps in Windows 11, you can here just you can click on it. Here you can see a blog on Windows 11 apps introducing TN. So here it is written that आप भाई यूएसए में जाओगे ना यार, यूएसए में वाले में आप यू कैन इंस्टॉल अपना अमेजोन स्टोर यू कैन इंस्टॉल वाई यू हैव टू डू इट ऑन फ्रॉम यूएसए। अगर यूएसए से है तो आप भाई यहाँ पर आराम से आप अमेजोन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अमेजोन से हम यहाँ से देख लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल developer.amazon.com एंड माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस। चलिए यहाँ पे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वेंट अर्लियर दिस ईयर। तो भाई अभी यहाँ पे अवेलेबल देखो दी दिख रहा है, ठीक है ऑलरेडी। So you can see it, and you can see it here video on it upon it, but now it is not even available. So what you have to do is how you can do it available. You have to just go to my link given in description. We are just doing temporary solution. Now it is not available in India, but it is available in US. So you can easily do from, you can go to insider program। आप insider program में जाइए और वहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। ये BlueStacks X है, ये इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आपको बस इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना डू इट कैंसिल एंड आप इसे ओपन करिएगा। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए ये ब्लूस्टैक्स एक्स आ गया है। तो आपको बस अपने ब्लूस्टैक्स एक्स को ओपन करने लेना है और वहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्ले स्टोर से बहुत सारी गेम्स ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ब्लूस्टैक्स एक्स थोड़े ही टाइम में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप भाई प्ले स्टोर आपको देखने को मिल जाता है। मैक ओएस में भी, फॉर मैक ओएस ऑल्सो, फॉर विंडोज ऑल्सो इट्स अवेलेबल। Manual current game, top games you can even play Free Fire, PUBG, BGMI, and many more other stuff. So see, it is opening, it's loading, and let's see what happens. A new BlueStack X version auto-grade will start in 5 seconds, ठीक है। तो ऐसे automatic installation will start। आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। आपको यहाँ पे एक यस पॉपअप आएगा, पॉपअप विंडो को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। Here you can see how apps are available here. Games and apps like WhatsApp, YouTube, Facebook you can install from easily from BlueStacks. You can see here is written that update BlueStacks X, it's coming here. Pop-up window is coming, okay. Updating BlueStacks, it's coming. You have to just install it. I've already installed it, so it's showing updating. You have to install. 100% it's installed. It's 100% अपडेट हो गया भाई, लिए। लेट्स सी, देखो भाई it is 9 years old, 1000 GB HSD and 4 GB RAM. You can clearly see here 4 GB RAM, 1000 GB HDD, 9 years old, okay. You can see it has been opened, and from here you can easily you can download, you can use easily Play Store with faster optimization and faster graphic card. Without a graphic card, if you don't have graphic card, then don't sort to worry, okay. See how smooth it's now working. It's very smooth. A little bit hang on my PC because I do not have a graphic card. भाई मेरे अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं से थोड़ी बहुत हैंगिंग चलती रहेगी, नहीं तो भाई लोग कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। प्ले स्टोर भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है
and hope you like the video. 4 GB RAM, how to install. There is only method using any emulator. You can also use Nox MSI player app, or you can even install Nox player or Prime OS. You can do anything like that. Your Prime OS, you can make Android. You can make an Android, and your Prime OS, it's Android version, it's Android system that you can install on your BIOS settings. So it's very easy and a very interesting task, and very I mean, it's very interesting. If it's you have 4 GB RAM, it will work smoothly on it, and if you have 8 GB RAM, then just wait for the new video. I'm gonna tell you how to do 8 GB RAM install your Play Store. You have to just install in 3 easy steps. If you have what can I want to say, if you have 8 GB, you can install just in 5 easy steps. So hope you like the video. Just subscribe to the channel and give it a like, and install BlueStack X from my description link, and वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बाय बाय. जहाँ मुझे अगर कोई नया सॉल्यूशन देखने को मिलता है तो मैं नया सॉल्यूशन लेके आऊँगा. आई विल ब्रिंग अप विद अ न्यू सॉल्यूशन वेयर डू नॉट नीड टू हैव BlueStack X on it.